Dear students, in this fifth lecture of semiconductors, we are going to study the law of mass action and carrier concentration in n-type semiconductors. Law of mass action and intrinsic carrier concentration. Since for an intrinsic semiconductors, we know that n is equal to p is equal to Ni. Here n representing the concentration of the electrons in the conduction band, while P representing the conduction concentration of the holes in the valence band. And in the case of intrinsic semiconductors, the number of electrons and holes are equal. Uh, since the electron and hole concentrations are n is equal to Nc exponent of minus Ec minus Ef by Kt. Here Nc representing the concentration of the electrons at the conduction band edge, while for the concentration of the holes P is equal to in the Nv exponent of minus Ef minus Ey by Kt. Here Nv is the effective concentration of the holes at the valence band edge. From these two equations 1 and 2, we get the Np is equal to Ni square Nc Nv exponent of minus Ec minus Ev by Kt. Here Ec is the conduction band energy, while the Ev is the valence band energy. The difference of these two is equal to energy gap Eg. We get the Nc Nv exponent of minus Eg by Kt. The effective density of electrons Nc at the conduction band edge is Nc is equal to 2 to 2 pi mn steric Kt by h square as a whole power 3 by 2. Here mn steric actually representing the effective mass of the electrons. The effective density of holes Nv at the valence band edge is Nv is equal to 2 into 2 pi mp steric Kt divided by h square as a whole power 3 by 2. Here p steric actually representing the effective mass of the holes. Using equation 4 and 5 in equation 3, we get Np is equal to Ni square is equal to 4 into 2 pi Kt over h square power 3 Mn steric Mp steric power 3 by 2 E raised to minus Eg by Kt. This shows that for a given semiconductor, the product of electron and hole concentrations is a constant at a given temperature and is equal to the square of the intrinsic carrier concentration. This is called the law of mass action and holds for both intrinsic and extrinsic semiconductors. If impurity atoms are added to a semiconductor to increase N, there will be a corresponding decrease in P such that the product Np remains constant. Thus we always have Np is equal to Ni square, equation 7. The intrinsic carrier concentration can be directly obtained from equation 6 or 7 as Ni is equal to Nc Nv under root exponent of minus Eg by Kt. Now Ni is equal to Nc Nv under root exponent of minus Eg by 2 Kt is equal to 2 into 2 pi Kt h square power 3 by 2 mp mn steric mp steric power 3 by 2 exponent of minus Eg by 2 Kt. For pure germanium at 300 Kelvin, the intrinsic electron concentration is about 2.4 into 10 to the power 19 per m cube. When the concentration of germanium atoms is 4.4 into 10 to the power 28 per m cube. This shows that at ordinary temperatures only about 5 covalent bonds per 10 to the power 10 atoms of germanium are broken and contribute to intrinsic conduction. On the other hand, in metals such as copper, about 10 to the power 28 electrons per cubic meter are available for conduction. Carrier concentration, Fermi level and the conductivity for extrinsic semiconductors. As described earlier, the donor or acceptor levels are present in an extrinsic semiconductor depending on the type of the impurity present. The concentration of donors or acceptors in a semiconductor affects the Fermi energy, the carrier concentration and the conductivity of the semiconductors. Acceptor level is lies just above the valence band, while the donor level lies just below the
valence band edge, conduction band edge. We consider the following cases: n-type semiconductor and p-type semiconductor. Carrier concentration for n-type semiconductors. The energy diagram for n-type semiconductors is shown in the next page. At 0 Kelvin, all the donors are in the unionized state. That is, all the donor levels are occupied with electrons. As the temperature increases slightly, some of the donors gets ionized and contribute electrons to the conduction band. Also, some of the valence band electrons may jump to the conduction band, leaving behind holes in the valence band. The number of holes produced in this process is, however, quite small. Therefore, the Fermi level must lie somewhere near the middle of the donor level and the bottom of the conduction band. We determine the equilibrium carrier concentration at a temperature T. Let there be ND, donors per unit volume, occupying the donor levels with energy ET. Assuming that EF lies more than few kT below the conduction band, the electron concentration in the conduction band is given by equation N is equal to NC exponent of minus EC minus EF by kT. Here this is this diagram band model of an n-type semiconductor. We can see that the valence band and the valence band energy is EV, and the conduction band conduction band energy is the EC. Now EI is the Fermi level of the intrinsic semiconductors, but when we added some impurity, then the Fermi level is shifted to the EF, and the donor level here is ED, and between the middle of the donor level ED and EC there is a Fermi level now, which is shifted from middle of the band gap. Now this is very near to the conduction band, and if we get if the some temperature is there, then electrons from the donor level gets energy and they move to the upward towards the conduction band and they conduct easily. The electron concentration must be equal to the sum of the concentration of ionized donors and D in the donor levels. साफ सारा जितने आप डोनर एटम जो है वो आयनाइज्ड होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे जब टेम्परेचर रेज होगा या एनर्जी मिलेगी. एंड इज द एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द थर्मली जनरेटेड होल्स इन द वैलेंस बैंड, दैट इज एन इज इक्वल टू एन डी प्लस एन पी. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उसके अंदर जो होल्स भी हमें साथ मिल रहे होंगे. दूसरा जो जितने जो हमारे पास हैं डोनर एटम्स जो हैं वो आयनाइज्ड होंगे, तो दोनों के सम के बराबर इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे. तो सिंस द प्रोडक्ट एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, इफ अ सफिशिएंट नंबर ऑफ डोनर्स आर प्रेजेंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, द कंसंट्रेशन ऑफ थर्मली जनरेटेड होल्स गेट्स सप्रेस्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन. अगर बहुत सारे डोनर एटम्स जो वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू द कंडक्शन बैंड, तो जो थर्मली जो जनरली इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेट होते हैं उनमें से जो होल्स हैं वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं. तो लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन 3 के मुताबिक फिर क्या है, 10 पी मे बी निगलेक्टेड इन इक्वेशन 1 के अंदर हम जो पी को निगलेक्ट करते हैं. सॉरी इक्वेशन 2 पी इन इक्वेशन 2 विच देयरफॉर बिकम्स एन इज इक्वल टू एन डी प्लस the concentration of minority carriers holes is given by using equation 4 in equation 3. P is equal to Ni square over Nd square, and the concentration of ionized donors is calculated as Nd plus is equal to Nd off into 1 minus F of Ed. So actually Nd representing the total number of the donor atoms and Nd plus are those which are ionized. So we have taken Nd into 1 minus F of Ed. Now using the Fermi Dirac distribution, Nd into 1 minus 1 over 1 plus exponent of minus Ef minus Ed by kt, and by simplification at the end we get equation number 6, Nd raised power plus is equal to Nd exponent of minus Ef minus Ed by kt, where we have neglected the exponent term in the denominator, assuming that EF lies more than a few kT,
using equation 1 and equation 6, in equation 4 we get NC exponential minus EC minus EF by KT is equal to ND exponential minus EF by EF minus ED by KT. And taking the log, we then again by simplifications and by shifting some values, EF we get ED plus AC by 2 plus KT by 2 log of ND by NC. NC is equal to 2 into 2 pi mn square KT by h square raised to power 3 by 2. We know that. Now equation 7 gives the position of the Fermi level at moderate temperatures. Since NC varies as 10 is about 3 by 2 as given in equation 8, this equation is not valid for T is equal to 0 Kelvin. Also, it is not valid for T approaches to infinity because at very high temperatures, the assumption of suppressing the holes does not hold good. The only valid information obtainable from this equation is that the Fermi level lies somewhere near the middle of the donor level and the conduction band edge at moderate temperatures. This is practically true for those values of T and D for which the second term on the right hand side is negligible. As T increases, the Fermi level moves downwards and crosses the donor level. For sufficiently large temperatures, it drops to Eg by 2. Coincide with the intrinsic level. This is, however, not apparent from equation 7. In such a case, the extrinsic semiconductor behaves like an intrinsic one. The variations of EF minus EI with temperatures for both N and P type silicon are shown in fig 2 for different impurity concentrations. तो जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो जो फर्मी लेवल है वो इंट्रिंसिक लेवल के साथ दोबारा मैच कर जाता है, जो कि डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है फिग 2 वेरिएशंस ऑफ द फर्मी लेवल विद टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी कंसंट्रेशंस फॉर सिलिकॉन. यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास ई एफ माइनस ई आई है हमारे पास वो ज़ीरो हो जाता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. वैलेंस बैंड से जो और कंडक्शन बैंड के पास ये दोनों जो है बिल्कुल मिड में इसके आ जाता है. जब इन द केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है वो वैलेंस बैंड के करीब होता है और इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो कंडक्शन बैंड के करीब होता है और जब द इंक्रीज द टेम्परेचर ये जो है ई आई के साथ मैच कर जाता है. द डिफरेंस बिटवीन ई एफ माइनस ई आई इक्वल टू 0 एट 600 केल्विन. तो ये इम्प्योरिटी क्या है, वेरिएशन ऑफ द फर्मी लेवल विद टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन फॉर सिलिकॉन. हमने इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन के हिसाब से भी क्या है वो डिफरेंट कर्व्स दी हुई हैं. सिंस एन आई इज इक्वल टू एन सी एक्सपोनेंट माइनस ई आई सी माइनस ई आई बाई के टी एंड पी आई इज इक्वल टू एन वी एक्सपोनेंट माइनस ई सी. तो ये डायग्राम जो है हमारे पास क्या है वेरिएशंस ऑफ द फर्मी लेवल विद टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन फॉर सिलिकॉन दे रही है. और यहाँ पर जो ई एफ माइनस ई आई जो ई आई रिप्रेजेंटिंग द इंट्रिंसिक लेवल और ये जो है इसकी ग्राफ जो है वो नीचे वाली कर्व्स जो है वो चेंज हो रही हैं कि फॉर द होल कंसंट्रेशंस जो है वो कंडक्शन बैंड फॉर द एक्सेप्टर्स जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड के करीब एग्जिस्ट करता है और जबकि फॉर द डोनर लेवल्स फॉर द डोनर इम्प्योरिटीज़ जो हमारे पास क्या है वो फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के करीब एग्जिस्ट करता है जबकि विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर जो है ई एफ माइनस ई आई जो कि ई आई जो हमारे पास इंट्रिंसिक लेवल दैट इज बिटवीन द मिडल ऑफ द बैंड गैप है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर 600 केल्विन पर जाकर हमारे पास क्या है वो कॉन्साइड कर जाता है उसके साथ जो कि इंट्रिंसिक लेवल के साथ. और ये जो 3 लाइंस है ये विद डिफरेंट इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन के साथ शो कर रही हैं. ठीक है. सिंस एन आई इज इक्वल टू एन सी एक्सपोनेंट माइनस ई सी माइनस ई आई बाई के टी पी इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू एन वी एक्सपोनेंट माइनस ई आई माइनस ई वी बाई के टी. क्वेश्चन 9 अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन the equilibrium carrier concentration and the position of the Fermi level relative to the intrinsic level as obtained from equations 1 and 9 is n is equal to ni exponent of minus ef minus ei by kt. तो हमारे पास ये डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास जो आता है इसका कैरियर कंसंट्रेशन का वो इस तरह आता है. थैंक्स.